Hey guys, welcome to my dream channel. In this video, I'll discuss with you JNU 2019 MA Political Science Entrance Exam question paper. Those who are preparing for JNU MA Political Science Entrance Exam of 2021, please watch the video till the end. अगर हम बात करें JNU एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न की तो 2018 तक JNU जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछता था, बट 2019 में JNU हैज़ चेंज इट्स पैटर्न. नाउ MCQ बेस्ड क्वेश्चन आर आस्क्ड. 2019 में JNU हैज़ आस्क्ड 50 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 marks, but in 2020 JNU has asked 100 question and each question carry 1 marks. So in this video, I'll be not discussing with you all the 4 options which JNU has asked, बट इस वीडियो में मैं सिर्फ क्वेश्चन और उसका राइट आंसर का ही डिस्कशन करूँगी. 4 के 4 ऑप्शन इस वीडियो में डिस्कस नहीं किए जाएंगे बिकॉज़ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो JNU इस ईयर नहीं पूछेगा. इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम दे विल गेट सम आइडिया कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है JNU एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. So guys, without wasting any time, let's start with the video. The first question is the argument that international relations are characterized by anarchy, which make it necessary for the state to maintain their independence and safeguard national interest in associated with. So again I am repeating the question. The argument that international relations are characterized by anarchy, which make it necessary for the state to maintain their independence and safeguard national interest, is associated with. So this statement is associated with realism. So realism is the right answer. Second question is, in Max Weber's classification, modern governments are increasingly dependent on one of the following. मॉडल गवर्नमेंट किस पर डिपेंडेंट है? सो द राइट आंसर इज द पर्सनल कैरिज्मा ऑफ रूलर. थर्ड क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एज वेल एज एलियंस. इसमें बहुत से ऑप्शंस थे बट एज आई हैव सेड मैंने सारे ऑप्शन नहीं लिखे हैं. आई ओनली रिटन द राइट ऑप्शन. So the right option for this question is equality before law. Equality before law एक ऐसा हमारा फंडामेंटल राइट है which is available for both citizens as well as aliens. Fourth question is, which among the following is not relevant for the federal polity of India? Article 243. Article 243, which deals with the panchayats and municipalities. Fifth question is, legal sovereignty in India lies with the constitution. So constitution is the right answer. In India, legal sovereignty lies with Indian constitutions. Sixth question is, good governance and participating civil society for development were stressed in वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑफ. यहाँ पे भी बहुत से ऑप्शन थे लाइक वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑफ 1992, 1997, 2000 एंड 2003. सो इसका राइट आंसर था वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑफ 1992. सेवंथ क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू प्लूरलिज्म? प्लूरलिज्म के हिसाब से स्टेट का मेन फंक्शन क्या है? द राइट आंसर इज कोऑर्डिनेट एंड हार्मोनाइज एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस. जितने भी ग्रुप और एसोसिएशन हैं उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट और हार्मोनाइज करना. दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू प्लूरलिज्म. एट्थ क्वेश्चन इज, नो एसोसिएशन कैन लास्ट इफ इट्स मेंबर डू नॉट प्रैक्टिस जस्टिस अमंग देमसेल्व्स. दिस इज़ सेंट्रल आइडिया ऑफ हुज फिलोसफी. कि कोई भी
एसोसिएशन है वो सर्वाइव नहीं कर सकता जब तक कि इसके मेंबर्स अपने आप में जस्टिस को फॉलो ना करें. सो दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद हुज फिलोसफी. दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद द फिलोसफी ऑफ प्लेटो. प्लेटो वॉज एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर हु इज़ मेनली पॉपुलर फॉर हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस. इसमें कि अपने जस्टिस के बारे में अपनी थ्योरी देता है. And the ninth question is, which group associated or which group accepted gradualness as the midwife of social change? The right answer is Fabians. Fabians believe in the gradual reforms. They didn't believe in the revolution. Okay. 10th question is, who used the term balance of power in four different ways? First, as a policy aimed at certain state of affairs. Second, as an actual state of affairs. Third, as an approximately equal distribution of power. And fourth, as any distribution of power. So the right answer for this question is Morgenthau. 11th is, according to Gramsci, concept of hegemony means. ग्रामशी के हिसाब से हेजेमनी क्या है? So according to Gramsci, the concept of hegemony means moral and intellectual leadership. Moral and intellectual leadership. Hegemony होती क्या है? Hegemony means when the power is exercised through the consent. Okay. 12th question is, the idea of rectificatory justice is part of whose theory of justice? The right answer is Robert Nozick. In his theory of justice, Robert Nozick identifies three principles on which this entitlement would conform to justice. He was giving the principle of entitlement. So three principles. Three principles कौन से थे? First is initial acquisition, second is voluntary transfer, and third is rectification. 13th question is, which political theorist used the concept of a basketball player Will Chamberlain to argue against pattern principle of distributive justice? Again, the right answer for this question is Robert Nozick. Robert Nozick, in his theory of justice, used the example of Will Chamberlain. So यहाँ पे रॉबर्ट नॉजी कहता है कि जस्ट बिकॉज विल चैम्बरलिन बहुत अच्छा खेलता है और इसकी वजह से लॉट ऑफ पीपल आर विलिंग टू पे फॉर हिम. ओके, तो ये जो है इट इज़ नॉट अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. इसको आप इलेजिटिमेट नहीं बोल सकते हो. ओके, बिकॉज millions of people are willing to pay for watching him to play basketball. It is his legitimate right. He is not forcing anyone कि आप मेरी गेम को देखो. ओके, जो millions of people है वो उसकी गेम की वजह से उसके लिए voluntary, they are willingly what we can say, they are willingly ready to pay. Okay, so that's why it is not against the idea of distributive justice. Okay. 14th question is, in Republican theory of freedom, freedom is defined as the absence of. The right answer is domination. In Republican theory, freedom is defined. In Republican theory of freedom is defined as the absence of domination. 15th question is, which of the following would be associated with new liberal politics? The right answer is free market, rational individuals and emphasis on home ownership. ये तीनों ही इसके right answer है. 16th is, who is the advocate of democratic peace theory? The right answer is Michael Doyle. 17th question is, election to the Rajya Sabha in India follow the principle of proportional representation by the means of. The right answer is by the means of single transferable vote system. 18th is,
A key figure in the development of pluralist theory is Robert Dahl. So Robert Dahl is the right answer. Who is the author of Gulamgiri? Gulamgiri के author कौन है? The right answer is ज्योतिराव फुले. 20th question. 20th question इसमें क्या है? एक statement है and you have to tell that who gave this statement. The statement is, my Hindu instinct tell me that all religions are more or less true, all proceed from the same God, but all are imperfect, but they have come to us through imperfect human instrumentality. The real Shuddhi movement should consist in each one trying to arrive at perfection in his or her own truth. Who said this? So, this statement is given by Mahatma Gandhi. So 20th question is, which among the following is not a reason that Mill effects in defense of the liberty of speech and expression? Right answer is difference between self-regarding and other regarding action. सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन क्या होते हैं? सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन की जिसके रिजल्ट्स, जिसकी आउटकम से आप, जिसके रिजल्ट और जिससे सिर्फ आप इफेक्टेड होते हो. अदर रिगार्डिंग एक्शन मीन्स when your act is affecting the other person, then it is called other regarding action. But when your act is confined to yourself only, then it is self regarding action. 22nd question is, what does rule of law means? Rule of law का क्या मतलब है? Rule of law means everyone is equal before the law. Everyone is equal in the eyes of law. 23rd question is, which among the following is not a feature of new public management? New public management का feature क्या नहीं है? Measurement. So measurement is the right answer. So Manovec conference जो second थी, that is talking about new public management, जिसमें कि बहुत से फीचर्स की बात की गई है, उनमें से जो है मेजरमेंट उसके फीचर में नहीं है. 24th क्वेश्चन, What was Aristotle's attitudes towards slavery? जो स्लेवरी के प्रति एरिस्टोटल के व्यूज़ क्या थे? सो एरिस्टोटल जो है स्लेवरी को नेचुरल कंसीडर करता था. ही कंसीडर्ड स्लेवरी एज नेचुरल. ओके, उसके हिसाब से जो स्लेव्स है, ही सेड दैट फ्रॉम द आवर ऑफ बर्थ सम मेंस आर बर्न टू रूल, जो है मास्टर्स. और स्लेव क्या है? स्लेव जो है मास्टर को सर्व करने के लिए बने हैं. स्लेव के पास अपनी कोई भी उनके पास कोई भी अपनी रीजनिंग कैपेसिटी नहीं होती है. उनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है अपने मास्टर की कमांड को फॉलो करना. 25th क्वेश्चन इज, द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन. जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी, थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन, सो इट इज़ बेस्ड ऑन structural function analysis of public administration in developing countries. 26th question is, which among the following was not part of original constitution of India? The right answer is 300A. यहाँ पे गलती से 330A लिख दिया गया है, बट वहाँ पे जो ऑप्शन था वो 300A था. 300A was not part of original constitution of India. Why? Because 300A, it deals with the right to property ना. right to property 300A जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से ऐड किया गया है. ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था. नेक्स्ट इज 27. In Orientalism, Edward Said applied whose technique of discourse while analyzing to the production of knowledge about the Middle East? The right answer is Michel Foucault. 28th question. The redrawing of the boundaries of electoral constituencies to maximize the efficiency of party support is referred to as gerrymandering. जो इसके लिए टर्म यूज़ की जाती है, दैट इज़ gerrymandering. 29th क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ नॉट ऑथर्ड बाय पार्था चैटर्जी? इस क्वेश्चन में भी बहुत से ऑप्शन थे और उनमें से जो है राइट ऑप्शन था द आइडिया ऑफ इंडिया. द आइडिया ऑफ इंडिया, दिस बुक इज़ नॉट ऑथर्ड बाय पार्था चैटर्जी. 30th क्वेश्चन है,
The universal breadwinner model of society has been criticized for undermining the importance of केयर वर्क। जो ये कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल ब्रेड विनर मॉडल का, जो कॉन्सेप्ट है इसको क्रिटिसाइज किया गया है बिकॉज इट इज़ नॉट गिविंग द इम्पॉर्टेंस टू केयर वर्क। 31. 2/3 majority of total membership of both house of parliament is needed for what? So it is needed for impeachment of president. 32nd. What sort of government did Hobbes सपोर्ट इन हिज लेवाइथन? लेवाइथन जो है हॉब्स की बुक है, एज यू ऑल नो हॉब्स इज एसोसिएटेड विद द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, और उसकी बुक लिवाइथन, द साइफ जो है सम इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। सो इस बुक में हॉब्स जो है, हॉब्स इज टॉकिंग अबाउट एब्सल्यूट मोनार्की। एब्सल्यूट मोनार्की मीन्स मोनार्क एब्सल्यूट होगा, उसके पास सारे के सारे राइट्स होंगे। जो कॉमन लोग होंगे जो उनको जो है राइट टू रिवोल्ट नहीं होगा। एब्सल्यूट मोनार्की। ओके। 33. Which among the following is critic of the theory of social capital in contemporary times? Which among the following is a critic of the theory of social capital in contemporary times? इसमें भी बहुत से ऑप्शन थे जिसमें कि पूछा गया है कि कंटेम्प्रेरी टाइम में हु इज़ क्रिटिक ऑफ सोशल कैपिटल थ्योरी। इसमें ऑप्शन कौन कौन से थे? इन दिस दे देयर वर ऑप्शन लाइक जॉन हैरिस, रॉबर्ट पुटनम, जेम्स क्लेमॉन एल्सेट्रा। सो इसका राइट आंसर होगा जॉन हैरिस। जॉन हैरिस जो है इन द मॉडर्न टाइम ही इज़ द क्रिटिक ऑफ सोशल कैपिटल। एंड रॉबर्ट पुटनेम जो है, रॉबर्ट पुटनेम बहुत ज़्यादा ही वॉज इन द फेवर ऑफ सोशल कैपिटल। ओके। एंड नेक्स्ट इज 34th. Who was the chairman of the advisory committee of the Constituent Assembly of India? जो एडवाइजरी कमेटी थी, एज यू ऑल नो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की बहुत सी कमेटीज़ थी, उसमें से कि 8 मेजर कमेटीज़ थी और बाकी अदर जो है माइनर कमेटीज़ थी। जो एडवाइजरी कमेटी थी दैट इज़ द पार्ट ऑफ द मेजर कमेटी। सो हु वाज द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी? द एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन थे सरदार पटेल। एंड दिस एडवाइजरी कमेटी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। 35th question is, who among the following advanced the notion of veil of ignorance? Veil of ignorance, this is very important term, and I am damn sure that you all will be aware about this term. So this term is associated with the John Rawls. John Rawls in his theory of justice used the term veil of ignorance. Veil of ignorance क्या होगा, जिसमें कि while deciding the principle of distributive justice, you have to imagine yourself under the veil of ignorance. In the veil of ignorance, the people will be ignorant of certain things like their social position in society, their talents, natural attitudes वगैरह, और they will be उनको कुछ चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा और कुछ चीज़ों के बारे में उन्हें पता होगा। सर्टेन थिंग्स दे विल नो अंडर द वेल ऑफ इग्नोरेंस। क्या होगा? प्राइमरी गुड्स के बारे में उन्हें पता होगा। दे नो दैट दे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट प्राइमरी गुड्स, एंड अनदर इज importance, they give importance to right over good, etc. These kind of things they will be known under the veil of ignorance. And 36th is, for Plato, a just society is one in which each of the class reflects the tripartite division of the soul. Each of the class reflect the tripartite division of the soul. Each of the class में he is talking about 3 classes. फर्स्ट फिलोसोफर किंग, सेकंड हो गया मिलिट्री, एंड थर्ड हो गया आर्टिसंस, फार्मर्स, इसमें ये सारे इंक्लूड होते थे। 36 नाउ 37th, freedom is the positive power of doing or enjoying something worth doing or enjoying. Who said? This is very important statement, and this statement is given by T.H. Green. 38th, which philosopher is linked to the idea of an early enlightenment proceedings in the 18th century? The right answer is Benedict Spinoza. 39th,
In comparative politics, the concept of civic culture is used for the study of. The right answer is it is used for the study of attitudes and participation in democracy. The concept of civic culture. As you all know, this is the very important book, and this book is written by Gabriel Almond and Sidney Verba in 1963, in which they were talking about three kind of culture. First is parochial political culture, second is subject political culture, and third is participant political culture. Now, 40th question is Hamza Alawi's analysis of the nature of the state in post colonial societies is based on which of the following countries? Right answer is Pakistan and Bangladesh. Mill understood liberty in which terms? He understood liberty in negative term. Okay. But in his liberty, we can find both negative as well as some positive elements. Uh, in his theory of liberty, he is giving two kinds of argument. First is individuality argument and second is truth argument. So जो उसका individuality argument है that has the negative elements, but जो उसका truth argument है that has positive elements also, but he is more concerned with the negative liberty. Okay. 42nd question. The mechanistic theory of organization is also referred to as the right answer is classical theory. जो mechanistic theory of organization है that is also known as the classical theory of organization. 43. Who among the following predicted that the next world war is likely to the conflict between the West and the West? The right answer is Samuel P. Huntington is in his book Clash of Civilization में. 44th question is which egalitarian theorist view would you associate with the idea of auctions, insurance schemes and free market? The right answer is Ronald Dworkin. These words like auction, insurance scheme, these words are used by Ronald Dworkin. He said that imagine a situation. You are in a ship and ship get distracted because it met an accident and you landed in a desert island. In this you are people have no connection, no relatives, etc. So but this island has enough resources, okay, and you have to distribute these resources. How will you distribute? So he said that through the auction is through you will bid for resources of your choice, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी चॉइसेस है उन रिसोर्सेज के लिए आप बिड करोगे. ओके. और फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है वो लैंड के लिए बिड करेगा वगैरह वगैरह. एंड इंश्योरेंस स्कीम ही इंट्रोड्यूस करता है लाइक सम रिसोर्सेज जो पहले ही रिजर्व कर लिए जाएंगे जो डिसेबल लोग हैं उन लोगों के लिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो परस्यू देयर नोशन ऑफ गुड लाइफ. 45th question is T.H. Marshall's definition of citizenship as full and equal membership in the political community refers to. The right answer is citizenship as status. 46th question is which of the following has the view that the function of the state appears overwhelmingly military and overwhelmingly geopolitical rather than economic and domestic? The right answer is Michael Mann. 47th question which of the following is not an idea of individualism? निम्न में से कौन सा जो है इंडिविजुअलिज्म का आइडिया नहीं है? सो इसका जो राइट आंसर था वो था टेकिंग केयर ऑफ इंडिविजुअल लाइफ फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव. 48th question the idea of derivative discourse in Indian politics is related with. The right answer is Partha Chatterjee. 49th question is the national tradition as we understand them are more often invented than historically evolved. Who said this? So this view is associated with Eric Hobsbawm. 50th and the last question is right are those conditions of social life without which no man can seek in general to be himself at his best. This is the very very important definition and this definition is given by Harlow J. Lasky. So in this video we have discussed 2019 question paper of JNU
इन द नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2020 के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे। गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।